So we'll wait for 2 minutes and we'll wait and see whether some more participants join us right away. And then we shall start reading. But in the meanwhile, I would like to know if any one of you has sent any reflection on the chapters that we read in the last few weeks. The last week's chapter was very interesting on weathering the storm and also on tackling with pain. So if anyone has anything to share before we start reading, you're most welcome to raise your hand and Manisha ma'am will give you access to speak. Yeah. Is there anyone who wants to say anything? Brinda, it may be a good idea to open the Joy of Learning Diaries and browse that. You'll find something definitely. Yeah. As a collection. It's also interesting when you browse the diaries, the others see it. So it offers an incentive for people to reflect. Absolutely. True. Yeah. Yeah. I think, Manisha, if you can help me with that. Quickly go through. You'll find something there, I'm quite sure. Yes. Okay, we have an increase in the number of participants. Yes, Manisha, you're saying something? No, ma'am. Actually, there's some problem with the internet today. So Okay. you have to open the Joy of Diaries. Oh, that's going to be a challenge for me. Sandeep, sir, I'll request you to open it, please. Kunal is also here. Jugjeev is also here. Anyone can do that. But Sandeep, sir, started already. Sandeep, of course. Thank you. What will we do without Sandeep? Okay, there's some reflection on the door-to-door bookstore. Okay, this is the last week's reflection. How nice. Would you like someone to read this blog post? It's a very interesting blog post. And if any of the students are there, it'll be wonderful to have them read. Yes. Is there anyone here who would like to read this? The blog post of today, My Good School session was truly inspiring. That one and maybe the next one also, which talks about your guest. Yes, Savita, please read. Ma'am, Yeah, I'll Manish, just yeah. open her, give her access, please. Yes, ma'am. The access is there. She has to read from the screen. Just give her talk. All right. Did, sir. Done. All right, good morning and Jai Hind, ma'am. Jai Hind. And sir, I'm Savita. So, which one I have to read? The second one. Would you Read like to both. read today's My Good School? Read. You can read both, in fact. They're both short reflections. Okay, ma'am. So today, my good school session was truly inspiration. The meet Inspiring. and the oh, so sorry, ma'am. Inspiring. The meet and greet with Pramod Sharma sir allow us to learn from veteran educationist who was dedicated 50 plus years to shaping education. His presence was a reminder of the value of lifelong learning and the powerful impact a single teacher can create. The first book, reading from the Door to Door Bookstore, Chapter 5, Words with Jagjeev Singh, highlight the importance of words, stories, and conversation in beginning people closer. It reminded me that books are not just meant for reading, they open door to meaningful connection and thoughtful discussion. Very well written, Pranjal. By Pranjal Rai 90. In today's session, Mr. Me Pramod too. Sharma was truly inspiring. His unwavering determination and clarity of purpose showed us what true passion looks like. As I asked him questions, I realized how deeply committed he is to education and personal growth. His explanation of gratitude reminds us to cherish every moment. One quote I believe in is
Purpose fuels passion, and passion shapes legacy. This session wasn't just informative; it was a powerful reminder to lead With with intention intention and heart. and heart. Today's today's first book, reading from Door to Door Bookstore, Chapter 5, made me realize how powerful words and stories can be in connecting people. It showed me that books aren't meant to read. They spark meaningful conversation and help building genius bond between individuals. Genuine. Can be Beta, the saying word like is that. genuine. Genuine. Genuine mean ma'am something that is common. No, Something like genuine means something which is very real, not artificial. Okay, genuine bonds between individuals. All right, yes. just a tip for you to read better. Go a little slow, look at the words before you speak them so that you're speaking correctly and with understanding. All right, Brinda, Thank you may I so read much, ma'am. this? Brinda, may I read this for them? yes, Because please. last time they were complaining I don't read on Sunday school. All right, okay, please do that, So Sandeep. I'm atoning my sins today for everyone. So I shall read this last one, which Savita just tried. And like Brinda said, it's important to look at every word. One. And second, there's no hurry. Enjoy every word. Try and feel the spirit of every word. In today's session, meeting Mr. Pramod Sharma was truly inspiring. So there is a full stop there. His unwavering determination and clarity of purpose showed us what true passion looks like. As I asked him questions, I realized how deeply committed he is to education and personal growth. His explanation of gratitude reminded us to cherish every moment. One quote I now believe in is passion fuels, sorry, Purpose. purpose fuels passion, and passion shapes legacy. This session wasn't just informative, it was a powerful reminder to lead with intention and heart. Today's first book reading from the Door to Door Bookstore, Chapter 5, made me realize how powerful words and stories can be in connecting people. It showed me it showed me that books aren't just meant to be read, they spark meaningful conversations and help build genuine bonds between individuals. 2 points. One, even I am fumbling looking at the screen. So you have to be very careful when you look at the screen and see every word. And you have to read in such a way that your emotion and your tone explains the meaning. That is how good communication is. What you mean to explain should come from your tone itself. Just remember, it's not what you say, it's how you say that matters. And this is the crucial human challenge we face with our emotions, with our conversations, with our tongue. We often end up saying, perhaps we did not mean that much. So it's very important for us to read in a similar manner. Read with the spirit, read with an emotion. Let's try and discover some other post where Brinda was here last. So, storytelling, Sunday sessions, allegory, growing confidence, exploring, visit. Let's see this. I'm trying to find one where someone has said something about animals and your last animal behavior. Yeah. Yeah, let's see. Register Gala, time paradox. Okay. So essentially, most of these posts, if you see, are for Manisha's session, which is on Hmm. TV. So storytelling, a bridge to connectivity, Sunday sessions that inspire reading and thinking. Let's see this. Okay, these are all reflections from the past Sunday session. Brinda, here you will find something. Yeah, today the story was Weathering the Storm by our mentor, Mrs. Brinda Ghosh. She is an amazing teacher, and I really enjoyed the way she told the story. I would also recommend that other readers join these classes every Sunday. They will definitely help improve reading. Okay, thank you for that. Brinda, just a point. Yes.
It says Miss Brinda Ghosh and you read Yeah. Miss. So can you explain that to everyone? Ms. The Yeah. word is Ms. MS. So children, sometime, somewhere around the mid 1960s or something, there was a lot of movement about feminism, and a lot of ladies did not want to be addressed as Miss or as Mrs. So they said we should have a common kind of a title in front of our names. And so this MS came into being, and it is pronounced as Ms. Ms. It's neither Mrs. nor Miss. Okay? So that's what it is. Other two spells are MISS, which Yes. refers to someone who's unmarried, Brinda. Yes, that's right. And the other word is MRS. These are short forms. Yes. MRS is actually Mrs. It's a short form. How did it Yes. become MRS, Brinda? How did it become MRS? I really wouldn't be able to tell you exactly how it became, but the full form is mistress. And instead of writing the whole word, they decided to use an abbreviation, which is MRS. Like Yeah, for Mr., it is MR, but I don't know why MR or why MRS. Honestly speaking, I will also have to find out, Sandeep. this is homework for everyone. Everyone, yes, The I can origin, see Ruchi was the also origin, smiling. the So, origin of MRS, the yeah, origin of MRS, and why yes, MRS and Ms. today are not in vogue, yeah. and we use MS. So this is food for thought. It could go down as a reflection piece for today. It's an important thing to understand because this is a very sensitive matter when you address someone. Yeah, So if you go the American way, they have started putting these just for the fear that you may get the person's gender wrong, you may address the person absolutely. wrong. So they will simply say Brinda Ghosh. Absolutely right. So do newscasters. Yeah, newscasters Most are newscasters also don't use the title now. And absolutely. anyway, I don't want to even venture talking about the American usage of pronouns against their names now, because that's very complicated and not worth discussing here. I think if most participants are here and if Manisha gives me the go ahead, we can start with the reading of the next chapter in the inner life of animals. Are we good with that? Yes, ma'am. All right. I hope, ma'am, you are able to see the screen. Yes, absolutely. Perfectly. All right. So here we go, children. Let's read about fear. This is something that all of us have within us, and we all encounter moments when we do feel this sense of fear. So let's see what the author has to say about the animals and fear. A person or an animal that doesn't know fear will not survive, because fear protects us from making deadly mistakes. What an opening sentence. Fear protects us from making deadly mistakes. Perhaps you are familiar with that queasy feeling you get when you're up somewhere high, like a viewing platform or the Eiffel Tower in Paris. I get a tingling sensation and the overwhelming desire to climb back down again as quickly as possible. That makes a great deal of sense from an evolutionary perspective. This inborn instinct prevented our forefathers from falling off high cliffs, which would have abruptly severed the generational line that leads to us. Look at this line, children. It's quite a difficult sentence to understand. Let's just reflect on this a bit. That makes a great deal of sense from an evolutionary perspective. Now, does anyone here know the meaning of the word perspective before we go on to evolutionary? Does anyone know what perspective means? Broadly speaking, you can even take a guess at it from the context. What is perspective? Yeah?
Ideas, the Ma'am, way we look at something, a point of view. Very good. All these are in the chat box. Very good, children. So yes, so what is an evolutionary perspective? That sentence would mean from the point of view of the generations of evolution. Now we all know what is evolution, right? The way a species grows with time and evolves, changes, is evolution. So if you are looking at it from the perspective of the cycle of evolution, then it makes a lot of sense to see that humans and animals are blessed with this sense of fear. Otherwise, the author says, they would have had all kinds of terrible accidents. So what prevented them from falling off high cliffs or having any other kind of a natural disaster or preventing a national disaster is this sense of fear. Wild boar show us that animals not only experience the gut-wrenching feeling of fear and recognize threats, but they can also process this information and use it for long-term planning. So let's take a little excursion to Switzerland and specifically to the canton of Geneva. In a public referendum in 1974, the people of Geneva voted in favor of a ban on hunting. Hunters are large mammals' worst enemy. And because hunters belong to the species Homo sapiens, ma'am, the page was turned earlier. Can we go back to the page? Yes, thank you. And because hunters belong to the species Homo sapiens, animals that are hunted fear humans. That's why they prefer to spend the day in thick forests and brushy areas out of the sight of their dangerous two-legged adversaries and usually venture into pastures and fields only at night. When hunting was outlawed in Geneva, the behavior of deer and wild boar there changed. They lost their wariness of people and now show themselves during the day. But it's not only the Genevese wild boar that have changed their behavior. All around, including in neighboring France, hunters are still blasting away. And as soon as the hunting season kicks off, especially in the autumn, when the drive hunts that use, packs of hounds start, the pigs become excellent. No. I think there's, have we missed a page? And so as soon as the hunting season kicks off, we were on that page. Packs of hounds. Yeah, go on to the next page, please. When the drive, packs of hounds start, the pigs become excellent swimmers. As blasts of the hunting horn reverberate through the air and the gunshots begin to ring out, many boar leave the French shore and swim across the Rhone River to the canton of Geneva. Safe on the other side, they can now thumb their snouts at the French hunters. The swimming swine show three things. First, they are aware of the danger and can remember the previous year's hunt when family members brought down in a hail of bullets had to be left behind dead or severely wounded. Second, they must be afraid, for this is what drives them to abandon the territory where they have left so comfortable all summer long. Third, they must be able to remember that they will be safe across the water in Geneva. Over the extended period of more than 4 decades, the journey has become a tradition passed from one generation of wild boar to the next. In times of danger, we cross the river to safety. The forefathers of these omnivores discovered this through trial and error in the 1970s. They obviously have a well-developed sense of self-preservation.
Children, you saw how this sense of self-preservation helped some of these animals, the boars, the swines that the writer is talking about, and how they actually swam across into the territory of another country in order to be safe. So that's how he is illustrating or giving us examples of how the sense of fear helps to protect us. Now, in the previous page, we came across this word Homo sapiens. Uh, Before I forget, I just want to tell all of you children here that there is this beautiful book. In fact, there are 2 volumes of this, Homo sapiens, which has come out now as a graphic novel written by the same author who has written the book, Homo sapiens, which has become very, very popular. So children, you may find the book a little tedious and a little boring to read, but you will find the graphic book, the graphic novel, which is like a comic, extremely interesting. So if you haven't seen it, I would urge you to get a copy for yourselves, because it would be a wonderful investment to buy a graphic novel of the Homo sapiens. All right. So we probably will be able to share with you the picture of the cover of the book. There are 2 of them, volume 1 and volume 2. All right. To go back to our reading, we know from the example with the electric fence that animals can become fearful just by remembering something. You know yourself how particular songs, smells, or pictures can dredge up memories of threatening experiences from the depths of your unconscious brain. Well, the same mechanism works with dogs. If you have a canine 4-legged family member, you might have had a similar experience to ours. Our little Munsterlander, Maxie, loved life and a change of scene. She just didn't like the vet. When she went there, she had to endure needles, and sometimes there was an unpleasant tartar removal or the somewhat gross squeezing of her anal glands. Little wonder that every time she went, Maxie stood trembling on the examining table, a little heap of misery as she submitted to each procedure. So, children, there's a lovely reflection I want all of you to do. It says over here that there are particular songs or smells or pictures which bring back memories of threatening experiences somewhere from within our unconscious mind. So I'd like all of you to think of something like this. If you've had an experience and if something has stayed with you, a smell, a situation, or a place, just think of it and maybe you can write and tell us about it, right? So let's carry on. But, ma'am, please go to the next page. But not only that, while she was still on her way to the vet, the little dog registered the telltale smells of the neighborhood through the car's ventilation system, and she began to be afraid the moment we turned into the parking lot. A specific film must have been playing through her head that anticipated the unpleasant situation. So let's grant that there is good evidence to show that animals can feel fear. But our little dog's reactions point to something else as well. Given that there was sometimes a gap of more than a year between visits to the vet, it is clear that dogs and other animals can remember things for a very long time, just as our goats remember the electric fence. However unpleasant it sounds and is, most wild animals are like Maxie. As soon as they spot us, they get anxious, especially when we are too close. Apart from fear, it would be interesting to know what other reactions we trigger in them. Can they tell us apart from other animals? Do they have any inkling that we build computers, drive cars, and tower above them intellectually, at least in some respects? Think about it from our point of view.
Apart from our pets, no single species of animal has a particular significance for us. None stands out from the others. So does that mean it is all the same to a deer when it sees a human, a hawk, or a hedgehog? Theoretically, yes. You can test this out for yourself when you think back to the last time you walked in the forest. Perhaps you remember rare or particularly large or colorful species, but can you remember every bird or describe every fly? You can't, because we take it for granted that our surroundings are full of life. And so we don't bother to notice details about all the creatures crawling and flying around us. It is difficult to get a clear idea of how other people see the world because it's almost impossible to get inside their heads. If we can't even do that, how can we hope to see things from the perspective of animals? The easiest way, to try and do this is by looking at animal reactions when we appear. What's important here is whether or not we play a significant role in their daily lives. On the one hand, we would have an impact because of the pain or even death we inflict while exploiting or hunting them. On the other hand, we could have an impact because of positive aspects of caring for them, such as providing them with food. The situations I find particularly gratifying are those where we are not involved at all, when we are neither harming nor helping them. In these circumstances, animals usually behave the way they do in representations of paradise. They basically ignore us. A particularly extreme example, all the way from Africa, was shared on the internet in the summer of 2015. The online edition of the Daily Mail posted photographs from Kruger National Park in South Africa. Lions were standing in the middle of a busy road, tearing the flesh off an antelope, with cars all around them. What surprised and shocked drivers most was that the predators were completely uninterested in the backdrop to their meal. Bushes, stones, people in cars, it was all the same to them. More harmless experiences of animals ignoring people are the photo safaris you take in Africa, where you can park close to zebra, wild dogs, and antelope. On the Galapagos Islands, on the coast of Antarctica, in the marinas of California, and around Yellowstone, all over the world, you can find places where animals allow people to get very close without getting wary. So why isn't that the case where I live in Central Europe? After all, it has one of the highest concentrations of mammals in the world. There are about 50 roe deer, red deer, and wild boar per square kilometer of wood. And although theoretically you should be able to see these animals at any time of the day or night, you usually come across them only at night. You have already learned the reason for this. In Central Europe, these animals are hunted wherever they appear. People are visual animals and we hunt by sight. And so the goal of our potential prey has to be to disappear from view. If we hunted by scent, then perhaps over generations, animals would have become almost odorless. If we hunted by hearing, they would perhaps have become extremely quiet. Instead, they endeavor to remove themselves from our field of vision. The most important element here is the time of the day. It is quite simple because we see barely anything in the dark. Our prey evade us by being active at night. We think deer and wild boar are naturally nocturnal, but they are not.
They need food at regular intervals around the clock. But instead of spending their days in meadows or along the edges of woodlands, which would be their normal behavior, they spend their days feeding out of sight in the underbrush or deep woods. They feel confident enough to leave their hiding places only when darkness falls, the time when people are optically challenged. That means that they are challenged to see. They won't be able to see them in the dark. It is only the very hungry or the careless youngsters who venture out earlier and dare to enter areas where hunting blinds loom over the landscape. We euphemistically call these raised hides, but to deer, they are death traps where their worst enemies perch and deal sudden death with a bang and a puff of smoke. So, children, here there's something very interesting about how animals can actually sense danger by smelling, right? They have a very strong sense of smell. And it's interesting that because he's talking about Africa, there's this very beautiful book. When you grow up, maybe you could remember to read this book called Roots. And in the book, the author talks about an African telling his companion there that, I can actually smell and tell you that the white man is around. So the white man referred to the Europeans, particularly the French and the British and the German, who ruled over them. And so they were always very wary of the white man. So this young boy, African boy, he says, when I'm around here, I can actually smell the white man, because these Africans were caught to become slaves, right? So they had to be careful about being hunted by another human being, one human being hunted by another, imagine. Right. So there are very interesting things that have happened in the world and that keep happening. So along with this, maybe we should also expose ourselves to other stories like that. So let's carry on here. Now there's this very difficult word for all of us, euphemistically. So it comes from the word euphemism. Now, euphemism is a good way of expressing something that is bad. For example, when someone dies, it's very stark and not very pleasant to say that he died. So we use a euphemism and we use other phrases, like we say he's passed away, or a lot of, in India, we say he's attained moksha. Christian people say he's had his salvation. So that's a euphemistic way of saying it, a very nice way to bring forth something which is not good or something which is not pleasant. So here the author is saying we euphemistically call these raised hides. Okay, they're called in a very nice manner raised hides, but they're actually traps. They're actually dangerous things for animals because that's the way they're hunted. That's not just my view. It's quite clear to foresters and hunters alike that wild animals learn from experience. This is how a herd of deer experiences the shooting of one of their own. There's a crack and a sudden smell of blood. The shot is often not a clean one, and the wounded animal manages a few meters of panicked flight before its legs buckle and it falls. This sight, coupled with the smell of stress hormones, imprints itself deep into the consciousness of the other members of the herd. And when there's a creaking and crashing from the hide as the hunter climbs down to salvage the downed game, the intelligent animals make the connection. From then on, before stepping out onto the path, they look suspiciously up at the raised hide to see if someone is sitting there. They could, of course, give the area a wide berth, but hunters usually set up their hides in places where particularly tasty food grows.
And if there isn't any, they simply sow an approximate mix of attractive meadow plants. These mixes have names like game land galoche. Doesn't that sound enticing? And so the evenings become a never ending game of roulette. If hunger wins, then the deer step out into the path too early and therefore into the shooter's visual range. If fear wins, the hungry deer don't come out to the feast laid out for them until it is pitch dark and the hunters go home empty handed. Foresters in Eifel National Park have observed just how sensitive deer are to their surroundings. A forester who hunts in the area and a Forest Service employee who works there owned the same make of car. Although the game beat a retreat as soon as the forester's car appeared, they stayed put when the Forest Service employee drove down the road. But it's not just deer that have mastered the skill of telling the difference between dangerous and harmless people. Our domestic animals also rely on their gut instinct here. Deer and company want to avoid hunters, whereas, as we've just seen with Maxie, dogs and cats want to avoid the vet. Hunters are considerably more dangerous than vets, and so it is no wonder that quite a few species of animals can tell what kind of people are out and about. Take the European jay. Whereas almost all animals consider children to be harmless, jays tend to tolerate adult hikers as well. That is, until hunters are on the loose. Then jays kick up an enormous racket and warn the animals nearby with their raucous calls. This is why many hunters continue to target these beautiful birds, which is quite nerve-wracking. Their situation, where for every potential prey, there are any number of potential hunters, is unique in the animal world because the situation is usually the other way around. Manisha ma'am, do we have time to continue? This seems to be a largish chapter. Jugjeev sir, can we continue? Yeah, I think so. We've just done a little over half an hour. Yes, okay. Any questions, children, so far? I hope you're understanding this very interesting chapter and relating to it. So, Great. Brinda, Yes, while sir. we were reading, there was this phrase, careless youngsters, in Yes, terms of the younger deer coming out. So, absolutely. I mean, none of these youngsters have caught on to it and none of them are protesting, it seems to me. Why are we labeling youngsters as As careless? careless. Can anyone tell us why you think youngsters have been named as careless? We old people, we tend to do that with human beings also, like Jugjeev sir said. And here the author is talking about the young of the deer being careless. So is there anyone who wants to tell us why you think they're called careless? Children? No one They is don't, answering. they don't know what is dangerous or not yet, and they All tend right. to Yes. So develop. they lack the experience. Very correct. Thank you for saying that. That's why they're called careless, because they haven't experienced it. Right? Okay. Also, you heard in Shikha ma'am's sessions, I think, how the different parts of the brain develop at different times. So, Absolutely. in puberty and in younger teenagers at least, your prefrontal cortex hasn't developed as much as your limbic system. So your Mm, desire for pleasure and all these things, and your risk-taking ability is more, but your yeah. prefrontal cortex hasn't developed. So you're naturally, not mentally at that stage like an adult is to, take a little more rational decision pertaining to risk, I'd imagine. Yes. True.
Thus, it's hardly surprising that fear and mistrust are widespread out in the woods and meadows. Let's take a look at which animals have to endure the stress of being hunted. I've already mentioned red deer, roe deer, and wild boar. As far as mammals go, you can add to this list chamois, mouflon sheep, foxes, badgers, hares, martens, and weasels. The, there are also quite a few species of birds, such as partridges, various pigeons, geese, ducks, gulls, snipe, grey herons, cormorants, and corvids. Is it any surprise that we hardly ever get to see any of the birds in this colorful array? Imagine if the situation were reversed and there were between 2,000 and 3,000 lions wandering through each square kilometer in Central Europe. That roughly corresponds to the numerical dominance of two-legged predators that confronts hunted game in this area. Now let's get back to the animal's point of view. Here, I don't know about you, but my powers of imagination at least have reached their limit. If there was deadly danger lurking in every corner and behind every bush, I wouldn't dare leave my house. If I had to, I would come out only at night when I knew that my persecutors would definitely be sleeping, or if they were up and about, at least they wouldn't be hunting me down. An animal that has seen a family member collapse covered in blood or has experienced fear and rising panic deep in its bones will pass these experiences on probably over many generations. Researchers have concluded that this transfer happens even in the absence of language, for as reported back in 2009, fear is not only felt in the bones, it is also expressed in the genes. The Max Planck Institute of Psychiatry in Munich discovered that during traumatic experiences, particular chemical markers, methyl groups, get attached to genes. They work like switches and alter the activity of the genes. According to the discoveries researchers made using mice, this means that behavior can be changed for life. The research also predicts that thanks to these altered genes, certain patterns of behavior can be inherited. In other words, our genetic code passes down not only physical characteristics, but also to a certain extent, experiences. And what experience could be more traumatic than the severe wounding or death of your next of kin? It is not a pleasant thought that the majority of the animals living around us are traumatized. Thankfully, the cohabitation of wild animals and people also has its pleasant side. There is hope that even in Central Europe, we can live peaceably with one another, as we can see from the increasing number of wild animals living in urban areas. The news is going around in animal circles that there's a kind of sanctuary set up in cities. And indeed, built up areas do count among the so-called no-go areas where hunting is banned. From the animal's point of view, the only difference between cities such as Berlin, Munich, or Hamburg and national parks is that the land has been developed. And what animals do you find in these urban centers? Wild boar in the front garden happily rooting around in the tulip beds, ignoring attempts to drive them away. Why would they leave? Foxes digging their dens in roadside embankments, raccoons setting up house in garage and attics. The animals are making themselves at home right in the middle of the spaces we've tamed. Whereas to us, tarmac and rows of drab houses symbolize a disconnect with nature. What animals see is an environment extraordinarily rich in vertical rock faces,
where all the mountain tops are bizarrely cube-shaped. Urban areas are increasingly revealing themselves to be ecological jewels. Berlin has one of the highest populations of goshawks in the world, about 100 breeding pairs. The birds nest in the city's parks, using them as a base from which to hunt rabbits and pigeons. I myself have seen a fox near the Brandenburg Gate calmly munching a discarded curry sausage. Not every city dweller can deal with this proximity to nature. An older woman explained to me that she was frightened a fox might appear at her patio door. Thoughts of rabies or fox tapeworm flashed through her mind, spoiling the anticipation of what might turn out to be a wonderful wildlife encounter. In fact, wild animals in Central Europe present few dangers. Rabies was eradicated many years ago, and fox tapeworm is quite rare, at least in the wild. I've already mentioned how the chain of infection passes from mouse to fox and the problems with fox feces. If a dog eats an infected mouse, and there are lots of dogs that hunt mice, then it too excretes thousands of eggs when it does its business. Moreover, after it licks its rear clean, it licks its fur, meaning that it can distribute tapeworm eggs no bigger than specks of dust throughout the house. A dog that is not regularly dewormed poses more danger than a passing fox. Perhaps we exaggerate dangers from the wild simply because if we didn't, there wouldn't be much left to fear. Do our archaic instincts simply need something dangerous to react to? Granted, it's a bit different with wild boar when they have piglets. A friend of mine who lives in Berlin, Dahlem, told me the animals won't leave his garden even when he tries to scare them away by clapping loudly. There's not much more a city dweller can do. The kite, a large bird of prey, is another European species that seeks out proximity with people and has preferences about who to hang out with. In earlier times, the birds were hunted and persecuted. However, since they've been protected, they like to spend time around people. That is, they like to spend time around people who own tractors. When the fields are cut in summer, the kites profit from farmers' labors. For the heavy machines don't only cut grass, they also dispatch numerous mice and other small animals into the great beyond. That doesn't sound nice, and it isn't good. However, for the kite, this is literally found food. In Hummel, you can spot the majestic birds as soon as the tractors drive into the fields to begin work. With a wingspan of just about 1.5 meters, they glide low to the ground, following the machines and keeping an eye out for flattened mice or ground up fawns. Martins are a less welcome sight, even though they are really beautiful to look at. They are not hunted in urban areas, and trapping, which used to be common in woods and fields, has declined considerably, so martins have mostly lost their fear of people. We once raised an orphaned animal that allowed us to stroke it and made a kind of contented purring sound, just like a cat when it feels good. At first, we fed the youngster from a can, but then to prepare it for life in the wild, we also gave it mice for breakfast. It didn't take long for the little chap to become so wild that we could only hold it when we were wearing gloves. Finally, we opened the door to its cage so that it could decide for itself when to leave us. It took 3 nights, and then the cage was empty, and we never saw the marten again. But perhaps it's still scampering around somewhere on our property in the dark, although if it were, it would be more than 10 years old by now. It's questionable whether we did ourselves a favor when we helped the marten. There are 2 cars parked in front of our forest lodge, a 4-wheel drive vehicle for work in the woods and a car for our private use.
One day I noticed a piece of rubber lying on the ground, a rubber hose lying on the ground near the bonnet of the Jeep. I lifted the bonnet right away and found a nice mess. A marten had done a thorough job of biting through a number of cables and hoses. There was nothing for it but to take the vehicle into the garage for repair. Okay. Brinda, there Yes. is still 4 more pages to go, which is Yes, about so 15, I think we 20% should, of the chapter. absolutely. We shall put a bookmark here on this page because it will get very, very tedious for the children also to keep listening to me reading pages after pages of this. All right. That So, I'm not so sure about, but you must be tired. yeah. So, children, I definitely want you to read through some of these pages. They're so interesting. This chapter, I have found it very interesting. And the way the author has actually brought to us the fact of animals, wild animals coexisting with people in cities, even in, big metros like Berlin. It is quite surprising. I didn't know this fact at all. And so, you can read this and think of instances. But if you look at it, there are places even in our own country where on the outskirts of cities, you do find a lot of wild animals trying to make inroads. Particularly when it is time for them to hunt for food. So the nilgai or some of these big animals, they stray into places where actually we have encroached their land, like I said this even in the last class. So this is what it is, very, very interesting. And while I was reading about all this, the hunting expeditions and things like that, I did talk to you all about my daughter-in-law Simran, who goes on photography expeditions, and she's at the moment in Tadoba in the national park there with an expedition to try out a camera. So, Jugjeev sir, whenever you think, whichever Sunday we No, can get we her, set up, just yeah. set up a Sunday with her. Because I We'll sort of think, figure it out. while we are on this book, it would be very interesting for her to come and share her experiences. Yeah, yeah. So, So you yeah, just set up any Sunday that she can do right. this. We'll sort of fit it into our calendar All in, right, great. in And we will September, have her coming October, in. whenever. Yes, that will be lovely. Yeah. Yeah. All right. Thank you so much. I'm looking forward to seeing some reflections from the children. Thank you, everybody. Have a good Thank you. rest of the Thank you. Sunday. Yep, you too. Manisha, ma'am, Good afternoon. Good morning, sir. over to you. Yeah. Good morning, everyone. Am I audible? Yes. No, I didn't hear good morning from my dear and lovely and pretty, cute little children. One thumbs up has come. Okay. So I'm muting quite a few so that actually, there's some problem today with my internet. So I've requested my daughter to screen share for us. Okay. So before I start, I just want to know from everyone, what do you mean and understand by the word lakshya? लक्ष्य से आप लोग क्या समझते हैं? It's like our goal or what we want to do, like ambition kind of thing. Okay, so can I have another word for goal, your ambition? You all can write in the chat box. You can punch your answers in the chat box. Very good. Aim, dream. And I missed good morning. यहाँ पे आप लोगों ने लिखा भी हुआ है. Thank you for your good morning. So aim and लक्ष्य. So हम अपने aim और लक्ष्य पे कैसे पहुंच सकते हैं? What should be done? Taking actions, small Okay. steps. Small steps, taking actions. What else? Action क्या लेना चाहिए? क्या होना चाहिए action हमारा? It should be like we should start from zero. We should not wait like for the perfect time to start. We should start it now. Hard work, action, determination, consistency towards dedication. One word you all missed out.
और क्या करना चाहिए? चलिए हम एम पे पहले बात करते हैं। आपका एम, आपका लक्ष्य। तो अभी राइट नाउ आप लोग मिडिल स्कूल में हैं, 6, 7, 8 टिल 9, 10th। तो मिडिल स्कूल में आप लोग क्या सोच रहे हैं कि आपका भविष्य क्या होना चाहिए, आपका एम क्या होना चाहिए? एंड लाइक क्या आप लोग का कुछ एम है, कुछ सोचा है आपने अपने फ्यूचर के बारे में? यस, तो क्या सोचा आपने काजल? आई वांट टू बी अ डॉक्टर, दैट्स नाइस, लवली। और क्या सोचा आप लोगों ने? बेटा जिसे बोलना है आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। ओके, सनबीम लाहड़तरा, 1 minute. Savita once, I think Savita said software engineer. Oh wow, that's great. Aliza, allowed to talk. ओके, और किसको बोलना है? Boards. हाँ जी, बताइए क्या आप बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में? यस अलीजा। Aliza, you raise your hand. Can you please answer this? Anyone can answer. आप लोग बहुत सारे लोग unmuted है. Good human being and helper. That's wonderful. Whosoever wants to speak, you all are, most of you are unmuted, so you can answer. कोई बोलना चाहेगा? Yes. Richa Gautam, please unmute her. रिचा गौतम। रिचा आप अपने हैंड रेज करेंगे प्लीज, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फाइंड यू। Okay, Sia, please put the picture. Share the screen. तो जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो हम सबसे पहले तो हम अपना एम और गोल को हम रखते हैं साथ में। और जब हम एम और गोल को रख रहे हैं उसके बाद हम डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं कि हम किस रास्ते पे जाना है, कैसे जाना है, उसमें जाने के लिए हमें और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं। एक आपके अंदर से भावना आती है, फॉर एग्जाम्पल सुबह सो के उठना, अलार्म चल रहा है बजता जा रहा है, बट हो क्या रहा है अलार्म चलते चलते, वो आपने उसको स्नूज कर दिया 10 मिनट्स के लिए, फिर 5 मिनट्स के लिए, फिर 10 मिनट्स के लिए, तो आधा 1 घंटा आपका टाइम वेस्ट होता है। कौन आपको बोलता है उठना है? आपके अंदर की भावना, इच्छा। तो वो आपके अंदर की इच्छा होती है, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और जब मम्मी आ करके आपको धक्के दे दे के उठाते हैं तो दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब पता है कि स्कूल बस आना है तो आपको उठना ही है, वो एक्सट्रिंसिक है। ग्रोथ एम है, उस एम को फुलफिल करने के लिए आगे आप जब बढ़ते हैं, अपने रास्ते पे आगे जाते हैं और आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, दैट बिकम्स योर ग्रोथ। बिना फोकस के हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन और फोकस अपने गोल के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड फुलफिलमेंट। सो दीज ऑल थिंग्स इफ यू कैन सी, एक स्टूडेंट को आगे बढ़ाता है और अपने लक्ष्य को कंप्लीट करता है। सो अब हम आगे देखते हैं हमारा चैप्टर लक्ष्य, उसमें क्या बोला गया है, कैसे बोला गया है। सिया, कैन यू प्लीज शेयर द बुक? तो हमारे आज का चैप्टर का नाम है लक्ष्य। लक्ष्य, लक्ष्य वो सपना है जिसकी एक सीमा है। नेपोलियन हिल। क्या लक्ष्य सच में इतना महत्वपूर्ण है जितना कि मैनेजमेंट गुरु इन्हें बताते हैं? क्या सफल होने के लिए लक्ष्य होना जरूरी है? क्या जुनून
एक ज्वलंत इच्छा और मेहनत सफल होने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैनेजमेंट गुरुओं का मानना है कि जहां एक और सफल होने के लिए अनेक गुणों का होना आवश्यक है, किंचित लक्ष्य निर्धारित करना महान सफलता के लिए अनिवार्य है। डैरेन हार्डी, डिजाइनिंग द बेस्ट फ्रेंड ईयर्स ऑफ योर लाइफ के लेखक लक्ष्य निर्धारित करने पर बहुत जोर देते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि लक्ष्य होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास एम नहीं है, जब हमें पता ही नहीं कि किस रास्ते पे हमें जाना है, आगे बढ़ के क्या करना है, तो हम लाइफ में थोड़ा सा दिशाहीन हो जाते हैं। डायरेक्शन हमारे पास होते हुए भी हमें राइट डायरेक्शन में जाने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो सबसे पहले जब हमें क्या करना है, एक एम, एक गोल को निर्धारित करना है, उसको हमें चूज करना है, उसके बाद ही लाइफ आगे बढ़ेगी। उनका मानना है कि लगभग 100% उच्च श्रेणी के उपलब्धि प्राप्त करने वालों में दो बातें समान थी: निरंतर सीखने के लिए प्रगाढ़ प्रतिबद्धता और स्पष्ट लक्ष्य। यह लक्ष्य एक दस्तावेज में व्यक्त था, जिसमें लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना विस्तृत रूप से बनी हुई थी। वह आगे कहते हैं, लक्ष्य के बिना तुम्हारा जीवन पतवार के बिना नाव जैसा है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नाव चलाने के लिए पतवार की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे लक्ष्य का कंपैरिजन वैसे ही किया हुआ है। लक्ष्य वो है जैसे कि नाव चलाने के लिए पतवार। तुम धारा के साथ बहते चले जाते हो और बार बार चट्टानों से टकराते हो। उचित लक्ष्य निर्धारण तुम्हें एक स्पीड बोट में बिठा देता है कि तुम्हें नाव को आगे बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य देता है। तुम सीधा अपनी मंजिल पर पहुंचोगे और वह भी तेज गति से। तो एम होना हमारे लाइफ में उतना ही जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। एक छोटी सी नाव, बिना लक्ष्य के हम एक छोटी सी नाव में बैठे हैं जो पतवार के सहारे चल रही है, बट जैसे ही हमारे पास एक लक्ष्य, एक एम हो जाता है, हमारा फोकस थोड़ा बढ़ता है और उसके कारण हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ के स्पीड ले लेते हैं लाइफ में, और उस तरफ जाने के लिए हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। हम में से कई लोगों ने लक्ष्य के बारे में प्रसिद्ध हार्वर्ड बिजनेस स्कूल स्टडी के बारे में सुना है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि ऐसा कोई अध्ययन किया गया था, और इसे एक अर्बन लीजेंड घोषित करते हैं। हो सकता है कि ये अर्बन लीजेंड रहा हो, लेकिन इसके परिणाम बहुत रुचिकर निकले थे। अपनी किताब What They Don't Teach You at Harvard Business School में मार्क्स मैकॉर्मिक अपने अध्ययन के बारे में बात करते हैं। 1979 के एमबीए के स्नातकों से पूछा गया कि उनके पास भविष्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य है जो कि लिखित रूप में हो। उन्हें प्राप्त करने के लिए उनके पास योजनाएं थी। सिर्फ 3% के पास लिखित रूप में लक्ष्य थे। 13% के पास लक्ष्य थे जो कि लिखित रूप में नहीं थे, और 84% के लिए निश्चित लक्ष्य थे ही नहीं। 10 साल बाद कक्षा का दोबारा साक्षात्कार किया गया। वे 13% जिनके लिए कोई लिखित लक्ष्य नहीं था, 84% बिना लक्ष्य वाले लोगों से दोगुना अधिक कमा रहे थे। उनमें से 3% जिन्होंने अपने लक्ष्य लिखकर रखे थे, बाकी के 97% सहपाठियों से 10 गुना कमा रहे थे। जहां यह अध्ययन सिर्फ कमाई को ही देखता है, विशेषज्ञों का मानना है कि अन्य बातों के लिए भी आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लिखित लक्ष्य सफलता के अध्ययन अवसर प्रदान करते हैं। अगर हम सुनिर्धारित लक्ष्य की परिकल्पना को मानते हैं, तो यह तर्कसंगत होगा कि हम अपने बच्चों को भी लक्ष्य निर्धारित के ठीक संवेदनशील बनाना चाहेंगे। लेकिन बच्चों के लिए इस विचार को समझ पाना बहुत कठिन होता है। इसका एक तरीका है कि हम बच्चों को वे कहानियां सुनाएं जिससे ये सिद्ध किया गया हो कि कैसे असंभव को संभव बनाया गया। कहानियों को बच्चों की रुचि के अनुसार ही चुनना चाहिए, चूंकि देवांग अधिकतर बच्चों की तरह अंतरिक्ष की यात्रा को बहुत रुचिकर मानता था। मैंने अंतरिक्ष की कहानी से ही लक्ष्य निर्धारण को जोड़ने का प्रयास किया।
दुनिया भर के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम इस बात के ज्वलंत उदाहरण है कि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण से क्या उपलब्ध किया जा सकता है। 25 मई 1961 को राष्ट्रपति कैनेडी ने कांग्रेस से कहा, मेरा यह मानना है कि इस राष्ट्र को इस दशक के अंत होने से पहले चांद पर कदम रखने और सुरक्षित वापस लौटने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। मानवता के लिए कोई भी अन्य अंतरिक्ष परियोजना इतनी अधिक प्रभावी नहीं होगी या दूरगामी अंतरिक्ष की खोज के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी, और कोई भी परियोजना प्राप्त करने में इतनी कठिन या महंगी भी नहीं होगी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अभी तक आप लोगों ने क्या समझा? क्या कोई साझा करना चाहेगा? डू यू वांट टू शेयर व्हाट हैव यू अंडरस्टूड सो फार? यस मैम। बोलिए बेटा। यस मैम। सेटिंग गोल इज इम्पोर्टेंट, इशिका कह रही है। और बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? Until you don't have enough motivation, you can't reach your destination. That's correct. Ma'am, I want to speak. Richa Gautam. रिचा बेटा प्लीज आप हैंड रेज करिए, बिकॉज मुझे आपका नाम इसमें नहीं मिल रहा है। आप हैंड रेज करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा आप कहाँ पे हैं। रिचा अब आप बोल सकते हैं, यू आर अलाउड टू टॉक। मैम हाँ जी बेटा। आस्था, just raise your hand, then Nisha ma'am को आसानी होगी आपको लोकेट करने में, then she unmute you. Yes, Asta, you are also allowed to talk. Yeah, hello. हाँ जी बोलिए। Yeah, Jai Hind ma'am. I Jai was Hind। having one question. हाँ Like, जी। as we know that ambition means laksh, to pursue that we should have drid nischay, mean consistency. So the question was, suppose we have two kind of people, one who shines like a star in just only one skill, but struggles in the rest, and another one who is like a rainbow, average in every skill, but not excellent in any. So, in your perspective, who is better prepared for real life challenges, the star or the rainbow? तो लक्ष्य पे डिपेंड करेगा ना आस्था, लक्ष्य क्या है। अगर जो लक्ष्य है वो जो एक स्किल से रिलेटेड है, तो जो व्यक्ति जिसने वो स्किल प्रैक्टिस की है वो आगे बढ़ेगा ना, कंपेयर टू द पर्सन हु इज अक्रॉस द बोर्ड। सो टोटली डिपेंड ऑन लक्ष्य क्या है। और खुशी ने भी पहले कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा उस समय, पर एम्बिशन और लक्ष्य में थोड़ा फर्क है। और ये जो अभी तक हमने पढ़ा, ऑथर ने हमको बताया कि लक्ष्य अगर है तो ये भी आप लिखें, जिससे आपको आपके सामने रहे, आप उसको देख सकें कि आपने क्या लक्ष्य बांधा है और आपके उसके अगेंस्ट आप कहाँ पहुँचे हैं। बड़ा लक्ष्य होगा, उसके छोटे छोटे माइलस्टोन्स होंगे, जैसे किसी ने पहले कहा था छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, तो उसी हिसाब से लिखित लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। ये जो अभी हमने पढ़ा, और उन्होंने एक स्टडी से के माध्यम से हमको बताया कि एक्चुअली उन्होंने ऑथर ने देखा कि जिन्होंने लिखित लक्ष्य लिखे थे और जिनके पास लक्ष्य थे वो आगे बढ़े कंपेयर टू जिनके पास नहीं थे। सो आपका जो सवाल है डिपेंड्स ऑन लक्ष्य क्या है। बट सर, जस्ट सपोज कि लक्ष्य तो सबके पास होता है ना, मगर अगर वो लक्ष्य अपने के लाइफ क्या में लक्ष्य है? अभी जैसे किसी ने चैट पे लिखा था कि उनका लक्ष्य है गेटिंग मोर देन 98% इन द बोर्ड, ठीक है ना।
So now for that Laksh, I mean, you have to be focusing on studies, right? Yes, See, can I see what is there? लक्ष्य होना चाहिए, है ना? लक्ष्य के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है प्लानिंग का आता है ना? प्लानिंग एवरी स्टेप दैट लीड्स यू टुवर्ड्स सक्सेस, है ना? तो अब वो जब प्लानिंग हो जाएगा आपका और उसके बाद आपका निश्चय आ जाएगा, ओके? तो उसके बाद इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर स्टार और अ रेनबो, बिकॉज देन व्हाट विल हैपन इज यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, है ना? क्या करना है, कितना, और उसके बाद आप करोगे इस चीज को, उसमें निश्चय आपका फिर आ जाएगा। और फिर उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप स्टार हैं कि रेनबो है, आप अपने को बना लोगे हर चीज में स्टार, है ना? तो उसके बाद आपका लक्ष्य आपको मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम एंड जुगजीत सर। यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। लक्ष्य का मतलब हुआ एम, आपको आगे क्या करना है। एक एग्जाम्पल सर ने शेयर किया कि किसी ने लिखा है मेरा लक्ष्य 98% मार्क्स लाना है, फॉर एग्जाम्पल इन मैथमेटिक्स, और आपकी जो स्किल्स है वो साइकिलिंग की है, तो क्या साइकिलिंग स्किल के साथ आप मैथ्स में 100 ला सकते हैं? तो आपको मैथ्स अच्छा करने के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को अच्छा करना पड़ेगा, रीजनिंग स्किल्स को एनहांस करना पड़ेगा, उसमें साइकिलिंग स्किल्स नहीं ऐड ऑन होगी। तो आपको उस लक्ष्य पे पहुंचने के लिए उस लक्ष्य के हिसाब से स्किल्स को लेके जाना है। तो स्किल्स सबके पास होती है, बस आपको अपने स्किल्स को समझ के अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करके, प्लानिंग करके, डिटर्मिनेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है। तो मेन स्टेप क्या होगा यहाँ पे? अपने आप को पहचानना, अपने एम, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, और जैसे सर ने बोला माइलस्टोन, हर माइलस्टोन पे जाने के लिए हमें कौन से स्किल्स की जरूरत है उसको हम एनहांस करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आई होप आई हैव आंसर्ड टू योर क्वेश्चन नाउ। या चलिए हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। निश्चय ही ये लक्ष्य कठिन और महंगा था। इसका अनुमानित व्यय 20 अरब यूएस डॉलर था। आवश्यक था डिजाइन, पुनः डिजाइन की प्राप्ति, इंजीनियरिंग, निर्माण, उत्पादन, प्रशिक्षण, पुनः प्रशिक्षण, परीक्षण, पुनः परीक्षण, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशन। इन सभी का क्रम से ऐसा संयोजन जैसे पहले कभी नहीं किया था। 500 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट्स और 250 से अधिक सब कॉन्ट्रैक्ट्स को कमीशन किया गया। सारे यूएस भर से वैज्ञानिक, इंजीनियर, शिक्षक और प्रबंधक एक लक्ष्य हेतु एक टीम के रूप में जुड़ने के लिए आए। मिलियनों भागों को मंगवाया गया। अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब ढूंढना था, जैसे चांद पर जाने की पद्धति, डायरेक्ट एसेंट, अर्थ ऑर्बिट रंदाबो या लूनर ऑर्बिट रंदाबो। चूंकि इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण 3 घटक आपस से संबंधित थे, उन्हें एक साथ संबोधित किया गया। समय सीमा स्पष्ट थी, 1 दशक। चूंकि इसमें मनुष्य का जीवन जुड़ा हुआ था, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीयता बहुत आवश्यक थी, व्यय को संभालना था और किसी भी प्रकार के विलंब के परिणाम स्वरूप खर्चे बढ़ सकते थे। इस अभियान को त्रुटिहीन योजना की आवश्यकता थी और इसे अनेक मील के पत्थर पार करते थे। सबसे पहले था एक एस्ट्रोनॉट के साथ एक कक्षीय उड़ान। 20 फरवरी 1962 को जॉन ग्लेन ने फ्रेंडशिप 7 मरक्यूरी अंतरिक्ष यान में पृथ्वी का चक्कर लगाया। दूसरा था अंतरिक्ष में चलना, जिसे प्रोजेक्ट जेमिनी के माध्यम से 1966 में पूरा किया गया। तीसरा था सैटेलाइट के माध्यम से चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना। प्रोजेक्ट रेंजर, लूनर आर्बिटर और प्रोजेक्ट सर्वेयर के ने आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई। चौथा था बूस्टर्स का प्रयोग करके इस अभियान को पूर्ण विश्वास के साथ लॉन्च करना। सैटर्न बूस्टर ने 15 लॉन्चों के बाद 100% विश्वसनीयता प्राप्त की, लेकिन एक दुखद घटना तब घटी जब एक मॉक लॉन्च के दौरान आग लग गई और 3 एस्ट्रोनॉट्स जिन्हें अपोलो सैटर्न में उड़ान भरनी थी की उस आग में मृत्यु हो गई।
आखिरकार 16 जुलाई 1969 को अपोलो ने अपनी उड़ान भरी। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा और 50 करोड़ लोगों ने उन्हें इतिहास रचते देखा और उनके ये प्रसिद्ध शब्द सुने, ये आदमी का एक छोटा सा कदम था और मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। मनुष्य को चंद्रमा पर उतारने और उसे सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य 8 साल से थोड़े से ज्यादा समय में प्राप्त कर लिया गया, क्योंकि हजारों लोग एकजुट होकर आए और उन्होंने लक्ष्य को पाने के लिए बाकी सब कुछ भुला दिया। जहां एक और अंतरिक्ष की खोज के चंद पहले दशकों ने रूस और यूएस के बीच सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए गहन प्रतिद्वंदिता देखी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने ये दिखा दिया कि प्रतिद्वंदिता के बीच भी एक साधा लक्ष्य को पाने के लिए आपसी सहयोग कैसे बनाया जा सकता है। 1993 में रशियन MIRZ और अमेरिकन फ्रीडम प्रोजेक्ट को एक साथ जोड़ा गया। ISS के 5 सहयोगी थे: नासा, द रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, द जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और द कैनेडियन स्पेस एजेंसी। इस स्टेशन के 2 भाग्य थे, एक रूसी और एक अमेरिकी। धरती के 330 किलोमीटर ऊपर सभी देशों के एस्ट्रोनॉट्स ISS तक पहुंचते थे के लिए रूसी सोयूज रॉकेटों का प्रयोग करते। आज जो सहयोग का स्तर देखने को मिलता है, आज से 4 दशक पहले उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह सब एक साझा लक्ष्य के कारण संभव हो पाया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सुस्थापित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए विश्व भर के भारतीयों को एकजुट किया और वह लक्ष्य था भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का 1975 में लॉन्च करना। एक अभियान में अनेक उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए व्हीकल्स और 2008 में चंद्रमा पर भेजने के लिए चंद्रयान को लॉन्च करना। द मार्स ऑर्बिट मिशन को 2013 में इस लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया कि वह मंगल लक्ष्य के कक्ष में पहले ही प्रयास में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बने। निजी स्तर पर एल्बर्ट लिएंडर बर्ट रुतान ने अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाने के लिए स्वयं की राशि से एक अंतरिक्ष यान बनाया। रुतान ने मात्र 25 मिलियन US के खर्च से स्पेसशिप 1 का निर्माण किया। इस प्रकार उन्होंने पहले ऐसे 2 व्यक्तियों के लिए अंतरिक्ष में जाना संभव बना दिया जो कि किसी भी सरकारी फंड के तहत स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे। अंतरिक्ष के ऊपर हर न्यूज रिपोर्ट, किताब, टीवी कार्यक्रम और फिल्मों ने मुझे देवांग के साथ लक्ष्य की शक्ति के बारे में बात करने का अवसर दिया। अंतरिक्ष की यात्रा के नाम से उसमें जो रोमांच पैदा हो जाता था, उसका मैंने भरपूर प्रयोग किया। जब हम छुट्टियों में सिंगापुर घूमने गए तो देवांग वहां की सफाई व्यवस्था और नागरिकता के जज्बे को बड़ी हैरत से देखता रहा। ये कितना अद्भुत देश है, ये लोग इतना अच्छा कैसे कर पाए हैं, उसने पूछा। इसके लिए सिंगापुर के निवासियों को श्री ली कुआन यू को धन्यवाद देना चाहिए। उनका एक लक्ष्य था और उन्होंने उसे प्राप्त किया, मैंने जवाब दिया। ली कुआन यू को दुनिया भर में सिंगापुर के संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है। ली 1959 में सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बने। 1965 में मलेशिया से अलग होने के बाद सिंगापुर बनाया गया था। 241 वर्ग मील के क्षेत्रफल और 1.879 मिलियन जनसंख्या वाले सिंगापुर के पास कोई भी प्राकृतिक संपदा नहीं थी और स्वयं की रक्षा हेतु बहुत ही सीमित क्षमता थी। ली के सिंगापुर को विकासशील देश से विकसित देश में बदलने के लक्ष्य को प्राप्त करने की ठानी। विस्तृत योजनाएं और नीतियां बनाई गई। अपनी किताब फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट द सिंगापुर स्टोरी में उन्होंने इस बदलाव की कहानी का वर्णन किया। सुरक्षा क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की गई। पुरुष नागरिकों को शस्त्र बल
पुलिस या सिविल डिफेंस फोर्स में सेवा करने के लिए कहा गया। बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक जीवन पद्धति को प्रोत्साहन दिया गया। भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था। प्रशासन में ईमानदारी को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों का वेतन निजी क्षेत्र के वेतन के समक्ष रखा गया। ली का मानना था कि सिंगापुर के लोग उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थे और उनका कार्य करने की शैली सारी दुनिया के व्यापारियों को उनकी तरफ आकर्षित करेगी। एक मजबूत कानून प्रणाली, पारदर्शिता और निवेश अनुकूल और बिजनेस के लिए उपयुक्त नीतियों के परिणाम स्वरूप सिंगापुर को व्यापार करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प माना जाने लगा। अपनी राजनैतिकता के लिए माने जाने वाले ली को अनेक पुरस्कार मिले, जिनमें लिंकन मेडल शामिल है, जो उन लोगों को दिया जाता है जो लिंकन की परंपरा और उनके चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत करते। 2009 में मैं लेक्चर देकर अफ्रीका से लौट रहा था। हमारी फ्लाइट रवांडा की राजधानी किगाली में कुछ देर रुकती थी। किगाली से दोहा की उड़ान के दौरान रवांडा ने एक इंजीनियर मेरे पास आकर बैठा। चूंकि मैंने इस देश की तीव्र उन्नति के बारे में पढ़ा था, मैंने उसमें रवांडा में जीवन के बारे में अनेक प्रश्न किए। हमने जो कुछ घंटे साथ बिताए, उनमें उसने मुझे एक अद्भुत कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जिसे देवांग को सुनाने का मुझे अवसर मिला। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एनीथिंग। हम एम अपना लेते हैं, अपने लक्ष्य को लेते हैं, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कई बार हमें फेलियर भी मिलता है। तो वो फेलियर को हमें प्रोडक्टिव बनाना चाहिए और उससे निराश नहीं होकर हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए और अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि हम कुछ भी एक छोटा सा चीज कर ले, हम उसमें पॉजिटिविटी को ला करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बट समहाउ वो चीज हम कामयाब नहीं हो पाते। तो हमें ये नहीं देखना है कि हम कामयाब हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, कहाँ तक हो रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए कि जरूरत क्या है, क्या वो मेरे एम के साथ अलाइंड है या मेरे एम के साथ अलाइन नहीं है। हम डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, हम आगे बढ़ने में कहीं रुक तो नहीं जा रहे, रास्ता तो नहीं भटक जा रहे। तो मेन रास्ते को पहचान के आगे ही बढ़ना है। तो आगे चल के देखते हैं यहाँ स्टोरी में देवांग को क्या सुनाया गया। 1994 में रवांडा में एक सामूहिक नरसंहार की घटना हुई, जिसमें फलस्वरूप उसकी 10% जनता खत्म हो गई। पॉल कगामे 2000 में रवांडा के राष्ट्रपति बने। शपथ ग्रहण करने के लिए कगामे ने 2020 के लक्ष्य के लिए एक परिकल्पना का सृजन किया। यह लक्ष्य थे उत्तम शासन, एक कुशल राज्य, कौशलपूर्ण मानव संसाधन जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी सम्मिलित थे, एक शानदार निजी क्षेत्र, विश्व स्तरीय भौतिक अधोसंरचना, आधुनिक कृषि और पशुपालन। कगामे का लक्ष्य था गरीबी में जी रहे लोगों की संख्या को घटाकर आधा करना और औसत वार्षिक आय को $237 से बढ़ाकर $900 करना। उन्होंने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही व्यवहारिक नीतियों को अपनाया। आज रवांडा की संसद में पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं। भ्रष्टाचार को नियंत्रण में लाने पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया। 10 साल से भी कम में रवांडा भ्रष्टाचार अनुक्रमणिक में शामिल 177 देशों की सूची में 83 से 49वें स्थान पर आ गया। बिजनेस करने के लिए वर्ल्ड बैंक की 200 सर्वोत्तम देशों की सूची में रवांडा 52वें स्थान पर है। स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय बीमा कार्यक्रम और बेहतर शिक्षा दर ने इस देश के रूप को बदल कर रख दी है। कगामे ने रवांडा को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था का रूप देने का निश्चय कर लिया।
और इसके चलते देश के 2 लाख से अधिक बच्चों को लैपटॉप मिले हैं। उन्होंने इस किशोर नागरिकों के मन ऐसा गर्व भर दिया है कि वह न सिर्फ अपने लाभ के लिए बल्कि देश की उन्नति के लिए भी पढ़ना और काम करना चाहते थे। देखने वालों ने रवांडा को अफ्रीका का सिंगापुर कहकर बुलाना शुरू कर दिया है। इन सालों में देवांग ने सीखा है कि कैसे लक्ष्य निर्धारण से देशों का स्वरूप बदला जा सकता है। इसने उसे ये दिखाया है कि अगर लक्ष्य बड़े पैमाने पर प्रभाव छोड़ सकता है तो निजी स्तर पर ये कमाल कर सकता है। हर हफ्ते मैं गंभीर लिवर समस्याओं से ग्रस्त बच्चों को देखता हूँ। उनके माता पिता अपने बच्चों को स्वस्थ देखने के लिए जमीन आसमान एक करने को तैयार है। इनमें से एक है मेरी एक मरीज विनय की माँ, जो औरों से अलग नजर आती है। उनका एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे को एक नई जिंदगी जीते हुए देखना। 11 साल के विनय को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली भेजा गया था। वह प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिनजाइटिस नामक एक असामान्य लिवर ग्रोथ से ग्रस्त था। इस रोग में बाइल डक्ट पर निरंतर धब्बे पड़ते जाते हैं और परिणाम स्वरूप लीवर काम करना बंद कर देता है। जब लीवर विफल होने का अंतिम चरण आ जाता है तो लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपचार रह जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने विनय को पहली बार देखा था। बहुत दुबला और कमजोर लग रहा था। एक बार बड़ा सा बैग लेकर चल रहा था जिसमें एक नली उसके गॉल ब्लैडर से जोड़ दी गई थी ताकि बाइल या पित्त बहकर निकल जाए। उसकी मुस्कुराहट खिली हुई थी और बोलती हुई आंखें थी। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी, मुझे आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। विनय कई महीनों से अस्पताल में था और उसकी अनेक एंडोस्कोपिक जांचें की गई थी। उसका 1 साल का स्कूल छूट गया था और उसने अपने दोस्तों से काफी अरसे से बात नहीं की थी। न खेल कूद, न कोई मनोरंजन और अस्पताल तक सीमित जीवन। फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। जब हम ट्रांसप्लांट की तैयारी करने लगे तो यह स्पष्ट हो गया कि उस परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। विनय की मां अकेले कमाने वाली थी और उनके 3 बच्चे थे। वह अपने लीवर का एक भाग दान करना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें मना कर दिया गया तो वह बहुत दुखी हुई। पिता का ब्लड ग्रुप मेल खाता था, लेकिन वह शराबी थे और उन्होंने काम धंधा छोड़ दिया था। हमने कहा कि यदि वह शराब छोड़ दे तो वह उपयुक्त डोनर बन सकते हैं। माँ ने हमसे कहा कि उनके पति की शराब की लत को छुड़ाने का काम हम उन पर छोड़ दें। हमारे अस्पताल और टीम ने निःशुल्क ऑपरेशन करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन फिर भी हमें दवाइयों और रोज लगने वाली अनेक वस्तुओं के लिए 6 लाख रुपए का इंतजाम करना था। हमने मुख्यमंत्री राहत फंड को लिखा। हमारे मरीजों में से 2 ने विनय के ट्रांसप्लांट के लिए योगदान देने की स्वीकृति दे दी। जब हम रुपये के इंतजाम में लगे थे तो विनय के पिता को शराब छोड़ने का प्रयास करते देख हमें बड़ा प्रोत्साहन मिला। 3 महीने बाद उन्हें एक डोनर के रूप में उपयुक्त घोषित कर दिया गया। तब हम 5 लाख रुपए इकट्ठा कर चुके थे और अभी भी और 1 लाख रुपए की आवश्यकता थी। गांव की पंचायत ने पड़ोस के गांव से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करके रुपए इकट्ठे करने का निश्चय किया। इस प्रकार आवश्यक राशि का इंतजाम किया गया और उसके पिता ने अपने लीवर का दाहिना भाग दिया। विनय ठीक हो गया और 2 हफ्तों में उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह आज भी स्वस्थ है और स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उसके पिता अब एक कारपेंटर का काम करते हैं और वर्षों से उन्होंने शराब को छुआ तक नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को लक्ष्यों से लाभ मिले तो हमें बहुत कम उम्र में ही उनके साथ लक्ष्य निर्धारित करने में उनकी मदद करने का काम शुरू कर देना चाहिए। हम एक छोटे लक्ष्य से शुरू कर सकते हैं और एक बार वह प्राप्त हो जाए तो फिर एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे को गणित अच्छा नहीं लगता
तो उसके लिए अगली ही परीक्षा में ए ग्रेड लाने का लक्ष्य निर्धारित करने का कोई अर्थ नहीं होगा। इससे ज्यादा गणित को अधिक रुचिकर और आनंददायक बनाना अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। एक बार बच्चे को गणित रुचिकर लगने लगेगा तो वह स्वयं ही उसमें अपने अंक बेहतर करने का प्रयास करेगी और समय के साथ लक्ष्य निर्धारित करने के मूल्य को समझेगी। मोहम्मद अल एरियन एक बहुत बड़े निवेश फंड में सीईओ के पद पर कार्यरत थे और उनकी वार्षिक आय 100 मिलियन यूएस डॉलर थी। अल एरियन ने तब अपने पद से इस्तीफा दे दिया जब उनकी 10 साल की बेटी ने उन्हें अपने ऐसे 22 मील के पत्थरों के बारे में बताया जिनको वह अपने काम की वजह से प्राप्त नहीं कर पाए थे। इंडिपेंडेंट में काहल बिल्मो द्वारा लिखे गए एक लेख में अल एरियन के शब्दों को व्यक्त किया गया है। मुझे बहुत खराब लग रहा था और मैं रक्षात्मक हो गया था। हर खोई हुई घटना के बारे में मेरे पास एक बहाना था। यात्रा, जरूरी मीटिंग्स, जरूरी फोन, अचानक करने के लिए आ जाने वाले कार्य। लेकिन मुझे ये समझ आया कि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की कमी महसूस कर रहा था, जितना कि मेरी समझ में आ पा रहा था। मेरे काम और जीवन के बीच का संतुलन नियंत्रण से बाहर जा चुका था और इस अनियंत्रण का प्रभाव मेरी बेटी मेरे साथ मेरे रिश्ते पर पड़ रहा था। मोहम्मद अल एरियन के पास अब एक नया लक्ष्य है, अपनी बेटी के साथ अपने रिश्तों का पुनर्निर्माण करना। हमें अल एरियन से सीख लेनी चाहिए और माता पिता होने के नाते एक लक्ष्य से शुरुआत करनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करना। अगर इस लक्ष्य को विशिष्ट, मापने योग्य और समयबद्ध बनाएंगे तो हम अपने बच्चों के साथ अपने रिश्तों में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लक्ष्य मनुष्य को वहां ले जा सकता है जहां कोई और मनुष्य पहले कभी नहीं गया हो। विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाया जा सकता है, राष्ट्र को बदल सकता है, जीवन बदल सकता है और जीवन बचा सकता है। तो फिर आप अपने बच्चों को लक्ष्य के जादू से अपने बच्चों की जान पहचान कराने में देर क्यों करते? उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त करने तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद। So with the end of this chapter, I request कि आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर लक्ष्य से क्या सीखा उसके बारे में बताएं। Sia, you may stop screen sharing. Thank you, Sia. तो क्या सीखा आपने? जुग्गी सर, आपने लिखा है हाउ अबाउट ट्राइंग टू बी अ फोकस्ड रैबिट, तो आप इसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, अब तो मतलब एआई का जमाना है, तो वी डोंट हैव टू बी थिंकिंग ऑफ कि यू आर द tortoise or the turtle and the rabbit can't be focused. We have to figure out how to make have to be a rabbit and be focused. और ये जो आपका ब्रेन है ना, उसका एक कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपका ब्रेन अडेप्ट कर सकता है और बहुत सेशन में ये बात बार बार आई है। डोर टू डोर बुक स्टोर में भी काल ने बताया था शास्का को कि मगर आपको लगता है कि वो कहती है मेरा दिमाग नहीं चल रहा, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, तो काल ने उसको कहा था किताबें पढ़ और पढ़। और तो ये आज के दिन में मेरे को लगता है कि हो सकता है। और अभी जो वृंदावन में किताब पढ़ी उसमें वर्ड आया था एवोल्यूशन, तो एक्चुअली ये एवोल्यूशन का पार्ट है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ये मतलब नेचुरली जैसे ब्रेन हमारा होता था वहां से आया है, पर ये इसको आप सिखा सकते हैं। And I've always wanted to actually show this
show a particular video. So maybe I'll show it, Manisha ma'am. Let me see if I can show it. I'm on a tab, but let me try and do this. Hang on. I don't know how to do this because I'm on my tab today. Let's see if I can do. Nahi ho raha, I'll show it next time. Share the link. You can share the link. Share the link. Let me try and do that. Sia Jugjeet sir has shared a link. So if you No, can show kahan pe share karu? Hang on. I'm gonna do it. chat box. It's not happening right now. Yeah. So No problem, sir. I So don't know how to. अभी वृंदा मैम ने भी बोला था फियर के बारे में, हमारा चैप्टर भी फियर का है। तो अगर हम फियर को एक एक अल्फाबेट अलग लेकर के यूज करते हैं, FEAR, तो फियर के हमारे दो चीजें बन सकती है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन और फेस एवरीथिंग एंड राइज। सो लक्ष्य हमारा वही है, आप अपने लक्ष्य को भूल करके आगे बढ़ना चाहते हैं या जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है उसके बारे में सोच के आप और ज्यादा मोटिवेट होके और ज्यादा प्लानिंग के साथ और ज्यादा कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन के साथ छोटे छोटे स्टेप्स में उस फियर को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। ज्यादातर हम ह्यूमन बींग्स क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि जल्दी से हमारा काम खत्म हो जाए, जल्दी से हमारा स्ट्रगल खत्म हो और हम आगे बढ़े। नहीं, एक्चुअली लाइफ में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रगल के समय आपका जो स्ट्रगल पीरियड है वो पूरा रहेगा, तो उस स्ट्रगल को किस तरीके से आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं, कैसे आप उसको लेते हैं। हम बार बार सोचे, वो भेड़िया वाली कहानी सबने सुनी होगी, भेड़िया आया। एक्चुअली में जब भेड़िया आता है तो लोगों को क्या लगता है कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है। तो हम अपने माइंड को उस हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। दैट इज व्हाट जगजीत सर वाज आल्सो सेइंग अबाउट द what did you say about neuroplasticity? So हमारा वैसे ही माइंड मतलब काम करता है। अगर हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं तो सब कुछ इजी लगता है, और अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो उस हिसाब से हमें लेते हैं। तो कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? Sunbeam Lahatara, please raise your hand, Sunbeam. One minute. Sunbeam Lahatara. Yes, you are allowed to talk. Sunbeam Lahatara, you are allowed to talk. After Sunbeam School, Savita Singh, you may ask a question. Or you can write your question, sir will answer the question here. Sunbeam Lahatara. बेटा हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। Can you hear them, sir? No, can't hear. They are muted also. Okay, Savita Singh, you may ask your question. Jai Hind, ma'am, and Jai Hind, sir. So my question is to Jugjeet, sir, that someone says that discipline is the pillar of success, and there are many things which are considered as pillar of success, that you will do this, then you will be successful, then you will do something like that, you will be successful. But according to you, which qualities we need to be successful in our life?
अभी आप घर पे हैं, हॉस्टल पे हैं, कहाँ पे हैं? I'm at my home, sir. अच्छा, what did you have for breakfast today? Yeah, नहीं, क्या खाया आपने? I had some oats and milk. Oats and then And milk with some fruits. with some fruits, right? So you had oats with milk, right? You had, so you can have, so you had oat porridge, right? We can Yeah. say. So to make oat porridge, you use oats and you use milk, Yeah. right? So same with, I mean, whatever you want to be successful, there's no one thing. If you have one thing and not the other, it won't work. It's a combination. So you have to have many things. If I say only discipline, but you have to do other things also. So it's a combination of many, many things which will get you the final output. So don't look for that one thing. You have to do many things for success, right? If you have some aim, one way to check whether you're progressing or not is to see how you're spending your time. My personal belief is, eventually it boils down to how am I spending my time? What am I doing now? How is it contributing to my goal? Okay. So I don't think there is one particular thing. All are important, right? And Manisha ma'am ने आपको एक picture दिखाई थी which had many of these things like focus, discipline. You have to know which direction you have to go. You have to walk on it. You need discipline. You need perseverance. You need some amount of curiosity to know more, to learn, to move. So there are many, many aspects. So I don't एक कोई चीज I mean, there's no one thing. I hope I've been able to communicate what I wanted to say. And so I have one more question, that what is the difference between skill, passion and interest? What are you interested in? I'm interested in physics most of the time. Okay. What do you like? What do you like to do most? I like to read some books, but not like I'm very like a warm of book. Read books sometimes, but most of the time I like to draw or write poetry or books. Books, read or draw or And to write books and if you had poetry. a choice, what would you do all day? I can't do the same thing the whole day. Okay. What would be the one or two things you'd do? I may dedicate some hours to study, some hours to writing the book, and the left time I will do something that entertain me. Okay. And how do you think you are in drawing? Okay. I'm not like that much good. I'm average, and I do my best in it. And sometimes I create very good artworks also, but not the Okay, whole time. so this part of creating your art is becoming more skillful in it. Okay. Yeah. Uh, what you like doing are your interests. Okay, you like physics, you like art, you like writing, you like reading. These are your interests. From what you have shared so far with me, it doesn't seem you have a passion, and that's fine. That's not a problem at all. At this age, just keep trying many things. Eventually, when you find that you want, if you had all the time and you didn't have to study, you didn't have to go to school, what would you like doing all your life? At that point of time, that will be your passion. Hope that helps. Thank you so much, sir, for answering my question. I hope you understood what I was trying to say, though. Yes, sir. Thank you so much for this Okay. answer. So we have questions from Sunbeam Hostel Latara. Ma'am, how can someone achieve a goal without teamwork?
How can someone achieve their goal without teamwork? This is first. Second, ma'am, in this world, there are so many people who haven't decided what to do in their life at the age 14, 15, and they used to get scared when they will do in future. So, ma'am, do you have any message for them? The first one I can try. Yes, sir. So I don't know how you can achieve anything without teamwork. So let's take sports as an example, right? Let's take cricket. Many of you follow cricket, right? Everybody has different roles in the team, and it's very obvious that you need teamwork to win, right? Let's take an individual sport, right? Let's take tennis, right? It would seem to you that is an individual playing, but behind that individual, and these days you see it really well, right? Alcaraz wins, or Sinner wins, or even Djokovic wins, or anybody wins. You can see that team sitting out there. Everybody in that team has a different role. It seems individualistic up front because eventually Djokovic is playing or Sinner is playing, but they have somebody behind them. There's a trainer. There's somebody who's helping them recover. There's somebody who's watching the other opponents and telling them, this guy does down the line, don't play over there. This guy's backhand is weak, play to his backhand. Somebody is helping him on that piece of it. So I think in today's world, now you can say that somebody like Djokovic can play on his own on an individual basis, but I can guarantee you the teamwork makes him better. So I can't think of anything really where the team is important. Even if you think that I have to score 98% mark and I can do it on my own, I think it's tough. I mean, if your teacher is helping you, tutors helping you, if your parents are helping you, if the parents are helping you in different ways, you don't have to get up to go anywhere. Mother's getting you food to eat on your study table. That's teamwork. So I can't think of anything where an individual, where an individual effort only will make you win. I don't know. If you can think of something, yeah, I'm happy to discuss it, but I can't think of anything. It seems individualistic, but actually it's not. I just want to add something here. Yes, everything is a teamwork, right from getting up in the morning till going to bed. At the same time, अगर आपको लग रहा है teamwork नहीं हो रहा है, तो कुछ communication gap हो सकता है, कुछ आपके interpersonal skills में gap हो सकता है, तो why don't you go and ask for help? कहीं ना कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको लग रहा है तो द बेस्ट थिंग विल बी आप जाइए और बोलिए कि यस मुझे हेल्प की जरूरत है एंड हेल्प लीजिए बिकॉज यस अगर इंडिविजुअल गेम में या लाइफ में भी आपको सक्सेसफुल बनना है आगे बढ़ना है तो अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते वी कैन स्टार्ट अकेले एट द सेम टाइम इफ यू फील यू हैव गॉट स्ट्रक समवेयर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज जाइए जिसकी भी हेल्प चाहिए उसे बोलिए एंड कई बार होता है कि लोग वेट कर रहे होते हैं हो सकता है एक दो बार उन्होंने अपनी तरफ से हेल्प करी हो आपको अच्छा नहीं लगा हो सकता है वहां पे स्ट्रक कर रहे हो तो इसलिए खुद जाइए हेल्प मांगिए एंड वो सर्टेनली आपकी हेल्प कर रहे हो उनको भी हो सकता है हेल्प की जरूरत हो और दोनों मिलके आप एक टीम बना के लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं सो आई होप वी वर एबल टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड एट द एज बिल्कुल मैम आपने बहुत ये इम्पोर्टेंट बात बोली दिस थिंग ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प we are always very shy to ask for help. We shouldn't be. Everybody needs help. We should ask for help when we are stuck. You should try and do something yourself. If you can't do, ask for help. It's very, very important. Very, very important point. सेकेंड क्वेश्चन आपका है 14-15 इयर्स में आप बहुत स्कैर्ड है कि लाइफ में आपको कुछ समझ पे नहीं आ रहा है क्या करना है तो ठीक है बेटा 14-15 साल बहुत बड़े आप नहीं आप बच्चे ही हैं अभी अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा तो गिव योरसेल्फ टाइम आप ये मत सोचिए कि आपके पीयर ग्रुप क्या कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स आपको क्या बोल रहे हैं और आगे लाइफ में आप कुछ नहीं कर पा रहे आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं आपको लाइफ में क्या करना है तो प्लीज आप अपने आप को थोड़ा सा और टाइम दीजिए 1-2 साल का बाय द टाइम यू हैव कंप्लीटेड योर 10th एंड 12th आपको बहुत ज्यादा आइडियाज मिल जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्टार्ट समथिंग विच रियली यू वांट टू लाइफ खत्म नहीं हुई है इट इज जस्ट द बिगिनिंग फॉर यू ऑल
So 14-15 साल बहुत ही आप छोटे हो. कोई इशू ही नहीं है. आप मतलब बेसिकली ट्राई करें चीजें. जैसे अभी एक उदाहरण दिया था ना कि मतलब आपको कोई पैशन नहीं नजर आ रहा था. इंटरेस्ट थे बट पैशन नहीं नजर आ रहा था. आप ट्राई करिए. इवेंचुअली इट्स अ मिक्स ऑफ व्हाट जो आपका पैशन है, जिसमें आपकी स्किल्स हैं, जो दुनिया को चाहिए और जिससे आपकी रोजी रोटी चले. इकिगाई के प्रिंसिपल्स हमको मैम ने बताए थे. ठीक है. यही है. और आप जब आपको अगर इशू आ रहा है कि अब मैं सब्जेक्ट क्या लूं क्लास 10 के बाद, तो आप ब्रॉड सब्जेक्ट लीजिए जिसके बाद आप किसी तरफ जा सकें. तो अगर आपको पता नहीं है तो आप ब्रॉड सब्जेक्ट लीजिए. जिसको किसी को पता है डॉक्टर बनना है, सो वेरी क्लियर बायोलॉजी लेनी पड़ेगी. राइट. बायोलॉजी के साथ आपके जैसे कॉम्बिनेशन आते हैं. यू विल हैव टू सी व्हाट स्कूल्स अलाउ एंड डोंट अलाउ. Right. So you take broad subjects which can allow you to go anywhere. If you think you want to do economics, please make sure you do maths also, because I know at least in Delhi University there used to be an issue. If you want to do economics, you have to have done maths. So I say you'll have to understand all these and take broad subjects so that you can follow what you want later. There's no issue in not knowing what you want to do. I still don't think I know what I want to do. So don't worry about it. एक क्वेश्चन इशिका ने लिखा है, हाउ टू स्टे काम इवन इफ योर गोल फेल्ड. बेटा, एक आपका गोल फेल हुआ है जो आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है, एक्चुअली नहीं है वो बड़ी बात. वो बहुत छोटी सी बात है. हम लोग इतने बड़े हो गए, हमें भी प्रॉब्लम आती है कभी ना कभी लाइफ में. हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, आगे ऐसे रास्ते पे जाना चाहिए, बट कई बार गूगल मैप भी फेल हो जाता है. तो गूगल मैप क्या करता है? डांटता है आपको अगर आप रास्ते पे जाते जाते कोई और लेन ले लो. नहीं, वो बड़े प्यार से बोलता है, रीराउट करता है, रीडायरेक्शन देता है. तो ऐसे ही हमारा गोल है. एक गलत रास्ता. फेलियर तो आएंगे. अगर फेलियर नहीं आए इसका मतलब आपने ट्राई नहीं किया है. एग्जैक्टली. फेलियर तो आएंगे. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. आप फेल करोगे, ज्यादा सीखोगे. सो डोंट टू वरी अबाउट इट. आपको डटे रहना है. मेन थिंग इज ग्रिट and perseverance and continuing down that path. It doesn't really matter. Not to forget, resilience is also very much important. तो failure आगे बढ़ के आपका हमेशा you will be able to achieve your goal. Time लग सकता है. They're all very well known stories, right? How many times Einstein failed before he succeeded? All these are very well known stories, right? I think 1,000 times or whatever, 999, I don't know. He tried something only 1,000 times and he succeeded or something. All these stories are there. You only see one aspect of all these people, but what behind it, uske पीछे कड़ा परिश्रम है, failures हैं. So it's for everybody in life. It's not, life is like this. You have to have the ability, resilience. Resilience is the key word. One last question before we end the session. Why time management is important for young children? No, time management is important for everyone. Who's asking this? This is Prateek Kumar. Okay, so Prateek, if your goal is to get 90% in, I'm just assuming, अगर आपका किसी ने बोला goal 98% marks लाना है, तो आप दिन कैसे spend करेंगे? What will you do in your day? How will you, what will you do? Can you unmute and talk, or how will it work? तो जिस जहाँ पे आप समय स्पेंड करेंगे, अगर 98% लाना है, जैसे मैडम ने साइकिलिंग का एग्जांपल दिया, यू वांट टू बिकम अ साइकिलिंग ओलंपिक मेडलिस्ट, तो आपको उस पे समय तो लगाना पड़ेगा ना. सो यू हैव टू डिसाइड वेयर टू स्पेंड योर टाइम बेस्ड ऑन व्हाट योर गोल इज. अगर वहाँ पे आप समय नहीं लगाएंगे, किसी और पे लगाएंगे, तो यू वोंट अचीव योर गोल. The purpose of time management is to ensure that you're spending adequate time on what you need to do. Quite straightforward. Sir, I have a question. Anji. Go ahead. You're on mute now. Sir, we can achieve goals by teamwork and study also.
Depends what the goal is. If your goal is to become a cycling Olympic gold medalist, so फिर आप तो मतलब you have to be cycling and staying fit and getting, building your stamina and keeping your body in good shape, nutrition, sleep, all those things. So it depends on your goal. Yes, sir. Every goal will have a certain path, no? Sir, I have to achieve. I want to go in merchant navy Why? because I love to travel in ships. You can be in the Indian Navy also. Yes, sir. You can be a sailor who doesn't have to be in the merchant navy. Why merchant navy? Because I love to travel in foreign countries. Yes, that's a career that pays well, and you get all these things. But please do speak to somebody who's been in the merchant navy. I have lots of friends who've been in the merchant navy. It all seems good from the outside. A lot of hard work. If you're willing to do that with all this thing, great. You're away from home for a long, long time. People are away for 3, 4, 4, 5 months from home. So because you're on the ship, some ships allow families to be there. And so, I mean, please understand what you're letting yourself in for and chase it. They have an exam, right? So you have to do well in that exam, and there's a process. So that's what you want to do. Great, and you already know that's Yes, sir. fantastic. Yes, sir. It's fantastic. Just go with it with your eyes wide open. Yes, sir. So can you Thank you, read sir. the question from Ifra Wahid Sandeem Balia? Or you want me to read it for you? Ma'am, I have a question. Don't you think a life with a single unyielding aim truly succeed, but the fixation on one destination risks missing the greater purpose found in anybody's journey? It's up to you to define what your goal is, what your ambition is. They're different. What your life, what would you like your life to be? So it just depends. If somebody wants to be, the world boxing champion, that's what they want to be. If somebody wants to join the merchant navy, that's what they want to be. You may want to be something else. And if you have, I mean, if you think that if you want to become a doctor and you don't need the concept of service, that's not true, right? You need skill, you need service, you need sport, you need study. You need all the aspects for all careers. Question only is how much skill and how much service, how much study, all that will all keep varying. So it seems it's going in one, and you don't have to develop other things, but you have to do have to develop other things. Eventually, to be successful in life, 90%, as Komal ma'am told us, is EQ, and only 10% is IQ. And EQ is like a lot of other things: how you manage yourself, how you manage your relationships, how you make decisions, and all these things come from many other facets, which you have to develop. So it seems it's unidirectional, but actually it's not unidirectional. You have to develop as a person either way, irrespective of what you're chasing. Sir, one last thing from my side. After reading all the questions, I'm understanding that these questions somehow they are trying to ask for a validation. What they have been hearing from their teachers or maybe from their parents. तो वो शायद validate करना चाह रहे हैं. That is why so much of doubt and other things are coming up. I don't know the reason. I'm just happy they're asking, and I hope it's helping them. So I would only encourage them to pucho, and the more views you get, better it is. But eventually, please make your own decisions. Don't let other people decide for you. This was what exactly I was looking forward for. See, आप लोग के जितने भी questions हैं, answers ज़्यादातर हो ही चुके हैं, and I don't think so there is anything left in the chat box. So decision in the end आपको लेना है, because it's your life. You have to find out your own strength, और उस strength के साथ life में आगे कैसे जाना है, इस हिसाब से आप अपना goal बनाइए. Goal को छोटे-छोटे part में break करिए, because एक छलांग में जो भी जाता है ऊपर, वो वापस भी वैसे ही गिरता है. तो छोटे-छोटे step के साथ आप जब आगे बढ़ेंगे, तभी आप true meaning of successful person बन पाएंगे, and वापस
आने के chances थोड़े कम होंगे, because when you have understood and tasted the sweetness of your journey, you are a better person and a better tomorrow is waiting for you. With that, thank you so much for joining today's session. In case of anything, do write to us. You know how to write. Give your write-up, your reflection in the form of a picture or anything as a podcast, a video, and then I'll be happy to publish it. Happy Sunday. See you next time, next week. Thank you. Bye. Hopefully, Shikha ma'am will be there Next week. Thank you. Bye-bye. Bye.